Hi students, so welcome to our class today. Today we will be discussing our idioms and foreign phrases for your MPCJ exams. अलग अलग तरह से यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। कहीं पे सिर्फ आपको वर्ड्स मिलेंगे एंड यू हैव टू आंसर देम। कुछ जगहों पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कहीं पे डायरेक्टली ईडियम है एंड देन यू हैव टू जज द मीनिंग। कहीं पे यूजेज इन अ सेंटेंस इज देयर एंड देन यू हैव टू टेल मी द मीनिंग। तो थोड़ा सा मैं आपको बस टाइम दूंगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, नहीं तो हमारे टाइम काफी ओवरऑल काफी लंबा टाइम खिंच जाएगा। So I will be giving you a small time to judge the meaning. So let us begin. Hello Prakash. Hello Shalu. Good afternoon. So let us begin our idioms and foreign phrases for MPCJ. This is Danish welcoming you all. So part of your vocabulary series, इससे पहले भी हम एक सेशन कर चुके हैं vocabulary का. This is your second series. आज सिर्फ foreign phrases and idioms हम देखेंगे, यही फोकस है. And as I told you, इसमें हमने अलग अलग कैटेगरीज टाइप ऑफ क्वेश्चन है क्या, मतलब कहीं पे आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप है, कहीं पे नथिंग. यू हैव टू टेल मी कि व्हाट इज द मीनिंग. फॉरेन फ्रेजेस के अंदर स्पेशली यू हैव अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन आल्सो दैट यू हैव टू बी केयरफुल. द फर्स्ट वन इज एन पासा. पी इज साइलेंट. सो व्हाट इज एन पासा? एन पासा हमारे पास हो जाता है बातों बातों में कुछ बोलना, to tell something while talking about something else. For example, I was talking to a friend and Pasa, he told me that he is going to Mumbai next week. Yeah. And Pasa, Sami told me that he is planning to purchase a new bike. So that is and Pasa. बातों बातों में कुछ बोलना. Mention something quickly while talking about something else. चलिए पहले तो पढ़ेंगे कैसे इस वर्ड को. दिस वर्ड इज जेने से क्वा. दिस इज साइलेंट. ये क्वा. सो जेने से क्वा. जेने से क्वा हो जाता है हमारे पास. एनी आइडिया? जेने से क्वा हमारे पास हो जाता है अ क्वालिटी विच इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, जो आराम से आप डिस्क्राइब ना कर सको, ऐसी कुछ क्वालिटी. दैट बिकम्स जेने से क्वा. For instance, okay, what makes it to become the topper of this exam? Who will be the topper of MPCJ? It is je ne sais quoi. Very difficult to describe. Is it hard work? Is it just luck? What exactly it is? Difficult to describe. Like what exactly these people are trying to do? Difficult to figure out. So this is je ne sais quoi. You can send me your comments. I'm able to read them. चलिए पढ़ेंगे कैसे इसको. RE, this is silent. This is rise and debt. And what is rise and debt? Rise and debt is the chief purpose of existence, the main reason for doing something. They say for your parents, you people are their rise and debt. You people are their reason for existence. I'm going a little fast because this is just a practice session that we are having. Chaliye, how are you going to read this? This is oeuvre. Oeuvre means the total work of an artist. Like अगर हम बात कर लें the oeuvre of लता मंगेशकर, तो मतलब total work, the total songs etc. जो कि लता मंगेशकर ने गाए, that will be her oeuvre. So Lata Mangeshkar, her oeuvre includes songs in over 1,000 Hindi films. और मराठी और दूसरी languages तो अलग हैं. वहां पे भी she has done a lot of singing. इसी से मिलता जुलता आ जाता है हमारे पास. इससे पढ़ेंगे शेफ डे ऑवरे. चीफ से आप ध्यान रख सकते हो. शेफ डे ऑवरे या मैग्नम ओपस, दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है. टू डिफरेंट वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, दैट इज द चीफ वर्क. ऑवरे हमने देख लिया था टोटल वर्क.
शेफ डिओवरे हमारे पास हो जाता है कि द मेन वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट जिसके लिए वो जाना जाता है। जैसे जेफरी आर्चर का यू कैन से कैट ओ नाइन टेल्स, या अगर हम बात कर लें पॉलो कैलो की द अल्केमिस्ट, हैव यू रेड द अल्केमिस्ट, अ वंडरफुल बुक। युval नोआ हरारी, उनका कौन सा है मैग्नम ओपस, कैन यू टेल मी द मैग्नम ओपस ऑफ युval नोआ हरारी? उनका है द सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। चलिए, नाउ यू विल हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर हियर, क्वेश्चन 1 2 3 4 5। What's the answer here? Quickly. Hello, Amit. Good afternoon. To see eye to eye with, that is used for to agree with. जैसे they don't see eye to eye with each other, मतलब they do not agree with each other. These days, you must be knowing Russia and Ukraine, they are not seeing eye to eye with each other. They do not agree on certain points. That is why that war is going on. What is second? A jaundiced eye. जॉन्डिस अगर किसी को हो गया तो वो फिर सही से देख नहीं पाएगा, जॉन्डिस पी लिया, तो उस केस में क्या हो जाता है, पर्सन इज नॉट एबल टू सी क्लियरली, तो जॉन्डिस आई इज प्रेजुडाइज, अ बाइज्ड व्यू, like whichever party is in opposition, it is having a jaundiced eye towards the work of the ruling party, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें या स्टेट गवर्नमेंट्स बात कर लें, दैट इज देयर जनरली दैट यू विल सी अक्रॉस इंडिया। To see red, to see red, अगर बहुत ज्यादा if you that show the red flag, red cloth to a bull, तो वो आपने देखा होगा, फिर क्या हो जाता है, it gets angry. So to see red is to be very angry. To push somebody to the wall, बिल्कुल एक तरफ धकेल देना, मतलब to insult someone very much, to humiliate someone. So for example, not satisfied with the defeating the team, India wanted to push Bangladesh cricket team to the wall, मतलब जबरदस्त तरीके से हराना, सिर्फ ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत करके हरा दिया, humiliating them. Fifth, to be in two minds, क्या होगा फिफ्थ का आंसर? To be in two minds मतलब uncertain, not able to decide. He is in two minds whether he should be appearing for this exam A or exam B. स्पेशली आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब दो एग्जाम्स इसमें काफी ज्यादा रेफरेंस है तो फिर क्या करें, यू बिकम टू माइंड्स, बिकम अनसर्टेन। कहीं भी कोई सा क्लियर नहीं हो तो यू कैन आस्क मी व्हाई दिस इज द आंसर। चलिए 6 to 10।
quickly. Yes. Sixth, Guruji, you are right, but Saurabh beta, you are wrong. To cut corners हो जाता है to make it the simplest way possible, easiest way possible, cheapest way possible. भले उससे थोड़ा सा क्वालिटी पे कुछ असर पड़ जाए, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन सबसे सस्ता, सबसे आसान. So to simplify the procedure, that is to cut corners. जैसे कि faced with because of this COVID, a lot of families they have to cut corners to meet their daily expenses. तो उन्होंने खर्चे कम किए. यहाँ पे they have to simplify the procedures. To rub someone in the wrong way, जो हम बोलते हैं ना कि गलत आदमी से पंगा ले लिया, तो वो ये rub someone the wrong way मतलब किसी को परेशान कर देना, annoy, irritate someone. So correct answer will be annoy him. Eighth. He is in the habit of responding at the drop of a hat. At the drop of a hat, matlab foreign. When it's a rapid fire round, the answers should come at the drop of a hand. At the drop of a hat, sorry. So yeah, he gets angry at the drop of a hat. फौरन उससे वो नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है. So without delay. So he is in the habit of responding. Response comes immediately without any delay. Ninth, बोल रहा है, you cannot throw dust into my eyes. To throw dust in someone's eyes मतलब धोखा दे देना. आंखों में, जो हिंदी में भी बोलते हैं, आंखों में धूल झोंक दी उसने, ठग ने. तो वही यहाँ पे that means to cheat someone. There was opposition to the new policies by the rank and file of the government. The rank and file of someone मतलब वैसे rank and file हो जाती है जो soldiers, जो ordinary soldiers रहते हैं, not the officers. तो rank and file मतलब ordinary members. जैसे जब भी इलेक्शंस होते हैं तो द पार्टी हैड आस्क्ड द रैंक एंड फाइल ऑफ इट्स मेंबर्स टू गो आउट एंड सीक वोट्स. सभी लोग बाहर निकले और पार्टी के लिए वोट मांगे. हैव अ क्विक लुक, कहीं कुछ कंफ्यूजन, लेट मी नो. चलिए नेक्स्ट. हाउ डू यू रीड दिस? हाँ, यहाँ पे टी इज साइलेंट सरप्राइजिंगली एंड जे इज ऑल्सो साइलेंट. सो इट इज मोयूस्ट. अभी हमने एक पढ़ा था जेनेसेक्वा. जेनेसेक्वा वॉज समथिंग डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, उसका ऑपोजिट हो जाता है मोयूस्ट. मोयूस्ट हो जाता है एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, बिल्कुल सही वर्ड अगर आप यूज कर रहे हो. सो दैट इज मोयूस्ट. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपका नेबर है जिसके साथ आपकी अच्छी नहीं पट रही और मैंने आपसे पूछा कि कैन यू डिस्क्राइब हिम, सो यू माइट रिस्पॉन्ड मोयूस्ट is the sorry, you can respond that rascal is the more used. Amit, seventh clear नहीं हुआ? To rub someone the wrong way मतलब to annoy someone, किसी को परेशान करना. To irritate someone. Clear, Amit? So quite often we struggle to get the more used. थोड़ा सा सोचना पड़ता है कई बार कि एग्जैक्टली यहाँ पे अब कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया जाए. Prima donna. Who is a prima donna? कई बार आपने देखा होगा कुछ शादियों के अंदर जिसमें स्पेशली फूफा जी काफी बदनाम है कि दे बस बैठे ही रहते हैं उधार के कुछ बात हो और हम नाराज हो जाएं.
So such people are prima donna who can get irritated or annoyed very easily. Quite often आप देखोगे कई बार ये जो celebrities रहते हैं, they behave like prima donnas. They want a lot of attention. Otherwise, they get angry and annoyed. So someone who demands to be treated in a special way and is difficult to please is a prima donna. So इसके तो examples as such I don't need to give. किसी भी आप शादी में जाओगे तो you will see at least a few examples of prima donnas. है ना? Prima facie, what is this? प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में जो हमें दिखता है, जैसे प्राइमा फेसी कहीं पे सुसाइड हुई तो प्राइमा फेसी इट वाज अ केस ऑफ सुसाइड, या कहीं लाश मिली तो प्राइमा फेसी इट वाज अ केस ऑफ मर्डर। पहली नजर में जो दिखा है, फर्स्ट इंप्रेशन। दिस इज schadenfreude। अब व्हाट इज schadenfreude? सैडिज्म अगर आप जानते हो उसी का सिनोनिम है schadenfreude इज कि किसी को कुछ परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, उसमें द अदर पर्सन ही enjoys, so that is schadenfreude, when you get pleasure in someone else's misfortune। So for example, when the manager's bike was stolen, the employees were filled with delightful schadenfreude। How do you read this? This is cha, sottovoce। सोटोवोची दबी आवाज में धीरे से कुछ बोलना ड्यूरिंग द क्लास। यहां तो अभी ऑनलाइन है, वरना ऑफलाइन में हैपेंस अ लॉट, देयर आर a lot of sottovoce remarks floating। सोटोवोची धीरे से, बिना जोर से ना बोलना, धीरे से। इट वोंट बी चीप, ही एडेड सोटोवोची। दिस मीन्स दिस साइन, यहाँ पे जो भी वर्ड है उसकी जगह पे ये साइन, a sottovoce remark। So that also happens when we are going out for having buying etc. So your parents or your partner etc. can say this, okay, that is costly। चलिए चेक आउट 11 12 13 14 भी 15 भी देख लेते हैं। दिस इज टू डिपेंड ऑन। यस दिव्यानी, सिनोनिम टू विस्पर अगर आप सटोवची है तो यू आर राइट। अमित बेटा यूज द सेम नंबरिंग। पिन मनी हमारे पास हो जाता है स्मॉल अलाउंस एटसेट्रा जो आपने दे दिया, जैसे फॉर इंस्टेंस फीमेल्स दैट दे कैन बाय पिन्स एटसेट्रा। सो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा मनी। So if you are working part time, you can get some pin money. To keep the wolf away from the door, to keep away from extreme poverty, बस इतना ही मिल रहा है कि you are just
subsisting. You are just existing. You are just getting enough to eat and drink. उसके ऊपर कुछ नहीं. So barely able to manage. So just able to keep the wolf away from the door. Death ही हो गई तो फिर तो wolf खाने आ गए. In that sense it is used. So A is correct. Get down to brass tacks. Get down to brass tacks हो जाता है हमारे पास. मतलब इधर उधर घुमा फिरा के नहीं, बल्कि जो मेन बात चल रही हो, जो फंडामेंटल्स हो, जो बेसिक्स हो, उसके बारे में. Begin to talk in plain, straightforward terms. घुमा फिरा के कुछ नहीं. So, for example, I know that the meeting lasted for 3 hours, but I am in a hurry. So, get down to brass tacks. Just tell me the main points here. चलिए, to show the white feather, किसी बर्ड के अंदर अगर यहाँ पे कलर्ड बर्ड है, उसके अंदर एक आध व्हाइट फेदर आ गया तो फिर उसको इतना अच्छा नहीं मानते कि हाँ इट्स अ गुड बर्ड. सो मतलब नॉट ऑफ अ गुड ब्लड. तो यहाँ पे इन दैट सेंस बहादुर ना होना, साइंस ऑफ कावर्डाइज. अ पर्सन इफ ही इज शोइंग द व्हाइट फेदर मतलब अच्छे घर का नहीं है, इसलिए ही इज लाइक दिस, ही इज शोइंग कावर्डाइज. तो टू शो साइंस ऑफ कावर्डाइज. So in army, they send back a person with along with considered to be very bad if someone is sent in between from the army if he shows the white feather, if he shows the covered eyes, निकाल दिया जाता है. To leave no avenue unexplored. 15th. नहीं अमित. टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं. जो भी आपके पास जो एक और आता है आपने सुना होगा, पिलर टू रन पिलर टू पोस्ट. जहां भी पॉसिबल हो जाए जो भी आप कर सकते हो वो कर लें. सो दैट इज टू ट्राई एवरी सोर्स. So when the old woman's son got ill, she left no an avenue unexplored and went from one hospital to different hospitals to get the treatment done. Have a quick look, kind confusion, so let me know. Chali, so let us move on to the next one. This one is irritates me and makes me ill. Sixteenth, I'm afraid the two brothers are at cross purposes. Cross purpose हो जाता है मतलब they have different intentions. मतलब they are working against each other. Purpose cross हो रहा है मतलब टकरा जाता है. तो आपस में टकराहट हो रही है. So for instance, the two leaders belong to the same political party, but now these days they are having cross purposes.
तो दोनों में टकराहट हो रही है कुछ। स्टोन्स थ्रो मतलब इतना पास कि अगर आपने पत्थर फेंका तो वहां पहुंच जाएगा ना, मतलब बहुत दूर नहीं। सो एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। There's a nice tea shop at a stone's throw away from the institute. In rapture, very happy, very enthusiastic. So, for example, when Sachin hit a six, the Wankhede Stadium broke in a rapturous round of applause. Out of place, out of place for him to talk on politics when the seminar was arranged to discuss recent trends in literature. लिटरेचर का सेमिनार था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, तो इट वॉज आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस दैट मीन्स जो कि ऐसा लगे कि डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस ना, सो दैट बिकम्स आउट ऑफ प्लेस, दैट इज इन अप्रोप्रिएट. So wearing bell bottom pants these days may look out of place. जा चुका उसका टाइम. Finally, get on someone's nerves. गेट ऑन समवन्स नर्व हो जाता है हमारे पास कि मतलब टू रिपीटेडली, स्पेशली रिपीटेडली अनॉय और इरिटेट समवन, किसी को परेशान कर देना, स्पेशली लगातार. तो बी, इरिटेट. So these in these summer holidays, the kids they start playing, and then some elders they get on their nerves. उनको फिर परेशानी होने लगती है कि बार बार इतना शोर शराबा होता है तो. अब क्विक लुक. चलिए तो आगे चलते हैं. अभी हम ये सारे वर्ड्स कर चुके हैं. जस्ट गिविंग यू अ मिनट टू क्विकली मैच द वर्ड्स विद देयर आंसर्स. लास्ट 15 सेकेंड्स. चलिए, this is the these are the correct answers. Have a quick look. And if possible, let me know your scores कितने रहे out of these 10. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. So what should be the answer here for first and for second? He is the kind of guy who always has the dash on the tip of his tongue and the wit to know when to say it and when not to. So obviously correct answer is more used. Exact appropriate word. Schadenfreude to getting pleasure in someone else's misfortune. Magnum opus, the chief work. Prima facie in the first look, first impression. Chali is going to a top law college here.
rise and debt, your reason for existence. So first was A, second D. चलिए, what is tabula rasa? टेबुलर रासा हमारे पास हो जाता है अ क्लीन स्लेट, मतलब पहले से कुछ आपके पास प्री कंसीव्ड नोशंस ना हो, पहले से कुछ आप मान के ना चल रहा हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मूवी आ रही है ऑफ अजय देवगन बाय रोहित शेट्टी, तो दैट थिंग विल कम टू योर माइंड कि अच्छा तो कुछ एक्शन मूवी होगी, या हो सकता है एक्शन कॉमेडी मूवी हो। सो दैट इज द केस कि आपके पास पहले से ही कुछ नोशंस हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, नो प्री कंसीव्ड नोशंस, पहले से कुछ आपने इमेज नहीं बनाई है, पहले से कुछ सोच के नहीं रखा हुआ है, सो देन दैट इज टेबुला रासा, अ क्लीन स्लेट। वर्चुओसो, who is a virtuoso? Virtuoso is a person who is skilled, especially doing something with the hands. So a virtuoso piano player. Idioms में आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, फॉरेन फ्रेजेस में नहीं। फॉरेन फ्रेजेस में थोड़े से वीक हैं अपन, है ना। T is silent. Au fait. Au fait means to have knowledge. Are you au fait with the rules of the games? El Dorado. What do you mean by El Dorado? एल्डोराडो हमारे पास हो जाता है, ऐसा कहा जाता है कि दिस देयर वाज अ सिटी इन साउथ अमेरिका, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मानते हैं कि लंका थी, इट वाज बिल्ट ऑफ गोल्ड, ऐसा ही यहाँ पे मानते हैं इन द यू कैन से वेस्टर्न माइथोलॉजी के साउथ अमेरिका के अंदर देयर वाज अ सिटी एल्डोराडो विच हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड। तो अभी यहाँ पे फिगरेटिव सेंस में भी इसको यूज किया जाता है एल्डोराडो को, कि कोई ऐसी जगह विच इज हैविंग अ लॉट ऑफ opportunities. You can get easily job there or good job there, so that can be called an El Dorado. Correct, Madhav, land of gold. So if you want to pursue a career in modeling, then Mumbai is your El Dorado. Ab ovo. बोल सकते हैं माधव, KGF. Ab ovo from the beginning. So for example, अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही नहीं किया है, तो इट विल बी null and void ab ovo. चलिए, 21 to 25, just the last set, then we'll end the class. Creative, which question you are answering? Question number missing. नहीं दिव्यानी। प्रॉस एंड कॉन्स हमारे पास हो जाता है फॉर एंड अगेंस्ट, क्या अच्छी बातें हैं किसी की, क्या बुरी बात है। जैसे मैं बोल दूं, व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ बाइंग एप्पल आईफोन, तो ये अच्छी बातें हैं उसकी, और ये बात यहाँ पे उसकी नेगेटिव हो रही है। Assault to Soberus is bribery. So, for example, if I tell you that if you want to get your degree, mark sheet तो आपकी आ गई है, if you want to get a degree from the university, you will have to
pay a sop to Cerebrus. You have to pay a bribe to the university officials. To give one a long rope, रस्सी को ढील देते जाना, तो हिंदी में भी बोलते हैं कि बस वो ढील दे रहे हैं. So that means to allow a man to continue his mistakes or crimes. कोई कुछ गलत कर रहा है तो अभी उसको ढील दिया जा रहा है. So in religion it is used often that God gives these evil people a long rope. उनको ढील देता है God, and then after one words the noose is tightened. To hit the nail on the head, टू हिट द नेल ऑन द हेड हो जाता है जब बिल्कुल एग्जैक्ट जो बात आप कर रहे हो, ये जो गेस कर रहे हो वो बिल्कुल सही है. सो टू गेस राइट इज टू हिट द नेल ऑन द हेड. So, for example, I may say that you have hit the nail on the head when you are saying that the root cause of all these problems is unemployment. तो बिल्कुल आपने सही गैस किया कि अनएम्प्लॉयमेंट है इन सब परेशानियों की वजह. So yes, Divyani, 24th correct. Finally, 25th, a baker's dozen. डजन होता है हमारे पास 12, लेकिन हमारे पास हो रहा है बेकर्स डजन. अब पहले एक टाइम पे इंग्लैंड के अंदर देयर वाज अ रूल के कम नहीं दे सकते. तो बेकर्स व्हाट दे यूज टू डू कि कहीं ऐसा ना हो कि एक कम हो जाए बाय चांस काउंटिंग की मिस्टेक या किसी वजह से, और फिर वो कम निकले तो फिर पनिशमेंट होगी. तो दे यूज टू कीप वन एक्स्ट्रा, तो वो कहलाने लगा बेकर्स डजन. मतलब 13 कि 13 रखेंगे, अगर एक हाथ गलती से मिस भी हो गया तो 12 तो निकल ही जाएगा वहां पे. तो वहां से फिर वो बेकर्स डजन शुरू हो गया, दैट इज 13. So, for example, there are some students here. Let us celebrate the good results. So, bring pastries. How many? A baker's dozen. 13 pastries. So, C is the correct answer. चलिए, and with this, I am coming to the end of the session. कुछ भी questions हो, so let me know. Otherwise, I am going to sign out just for a few seconds more. If you want to say something, let me know before I sign out. It was good to be with all of you people. I hope you have enjoyed this session. I hope you have learned some new words and idioms in this session. It was good to be with you people. चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी और सेशन में ऐसे ही. टिल देन, टेक केयर, गुड बाय.